Hello humans, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. तो आज के इस वीडियो में we are going to study about behavioral counseling, जिसमें कि हम इसके टेक्निक्स पढ़ेंगे, गोल्स पढ़ेंगे, देन इसका व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ेंगे, देन सम स्ट्रेंथ्स एंड limitations. So let's start with the video. So, behavioral counseling focuses on identifying and modifying observable and measurable behaviors. Okay, तो बेसिकली इस थेरेपी को तब यूज किया जाता है, उन बिहेवियर्स के लिए यूज किया जाता है जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड वी हैव टू मॉडिफाई देम. Okay, we know ki that those behaviors are, interfering in our day-to-day life. They are not healthy behaviors, so it is generally used at that time. So this counseling is based on the idea that behaviors are learned and can be changed through systematic interventions. So ये थेरेपी का मानना है कि जो behaviors होते हैं वो हम सीखते हैं. ओके, हम लर्न करते हैं कहीं से, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं सिस्टमैटिक इंटरवेंशंस यूज करके. अब वो सिस्टमैटिक इंटरवेंशंस कौन से होते हैं दैट वी विल रीड इन फर्दर स्लाइड्स. फिलहाल के लिए बस इतना. Then behavior therapy is used to address a wide range of psychological and emotional issues with a primary focus on a specific behavior. Behaviors, their antecedents means कि किस वजह से हो रहा है वो बिहेवियर, मतलब क्या ट्रिगर कर रहा है उस बिहेवियर को, एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उससे उससे क्या असर हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. लाइक सपोज स्मोकिंग. स्मोकिंग एक स्पेसिफिक बिहेवियर हो गया, उसका एंटीसीडेंट हमने सपोज ले लिया स्ट्रेस, की स्ट्रेस हो रहा है तब इंसान कर रहा है, तब इंसान स्मोक कर रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस हेल्थ खराब हो रही है. Then behavior therapy is a therapeutic approach that aims to understand and change problematic behaviors by using principles of learning, conditioning, and reinforcement. It is based on the belief that behaviors are learned responses to stimuli and through targeted interventions, individuals can unlearn maladaptive behaviors and develop more adaptive ones. ठीक है, तो लाइक स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया था, तो यू कैन अनलर्न that habit or that behavior, and you can adapt a more adaptive behavior whenever you get stressed, because that was happening because of stress. तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए दूसरा तरीका, लाइक जर्नलिंग या फिर प्लेइंग योर फेवरेट स्पोर्ट, लाइक दोज थिंग्स. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं टू टेल यू कि इस लाइन का मतलब क्या है. मूविंग ऑन. बिहेवियर थेरेपी या काउंसलिंग इनिशिएट हुई थी 1950s और 60s में. It presented a powerful challenge to the principles of psychoanalysis, okay? Because this focuses on present mostly. It doesn't focus on past issues. और psychoanalysis का focus main unconscious पे था. इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, और ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करती है, ना कि अनकॉन्शियस पे, प्रेजेंट पे फोकस करती है, ना कि पास्ट पे. एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म होता है विद क्लियर गोल्स एंड रैपिड चेंज इन क्लाइंट्स लाइफ. ये जो अप्रोच होता है ये हेल्प करता है कैसे प्रॉब्लम्स में, लाइक ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, या सब्सटेंस अब्यूज, या साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, sedentary lifestyle, etc. And this approach is helpful in addressing problems like anxiety, stress, assertiveness, parenting, and social interaction. Moving on, behavioral therapy founders or developers. So, Ivan Pavlov, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, he identified and described a type of learning जिसको हम classical conditioning बोलते हैं. Like we all know about that experiment he did with dogs, conditioned stimulus, then conditioned response, and all those things. So classical conditioning is basically learning through association. Then second pioneer was John W. Watson. He was an American psychologist and he proposed the theory of behavior, proposed the theory behaviorism. ठीक है, हमें पता है कि behaviorism किसने दी थी, वॉटसन ने दी थी. देन B.F. Skinner, he developed theory of behavior, और we can say radical behaviorism, जो कि फाउंडेशन बनी जिसपे बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेस्ड है. ठीक है, तो B.F. स्किनर का सबसे मेन रोल है बिहेवियरल थेरेपी में.
देन एल्बर्ट बेंडूरा एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, सो ही स्टेटेड कि जो लर्निंग होती है और जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर चेंज होता है वो इट कैन अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर। ठीक है। मतलब हम दूसरों को देख के सीख सकते हैं चीजें बेसिकली। मूविंग ऑन, व्हाट इज व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इन बिहेवियरिज्म, or we can say behavior counseling. So behaviorists as a group share the following ideas about human nature. So the first one is the concentration on behavioral process, that is processes closely associated with overt behavior. ठीक है। तो बेसिकली मतलब ओवर्ट बिहेवियर पे जो भी ओवर्ट बिहेवियर है मीन्स जो कि हम नोटिस कर सकते हैं बाहर से, जो भी इंसान एक्शन लेता है, दैट इज वो यहाँ पे तो मतलब कि उस पे फोकस किया जाता है बिहेवियर काउंसलिंग में। फोकस हियर एंड नाउ पे होता है, मतलब प्रेजेंट पे होता है, ना कि देन एंड देयर पे। एन अजम्पशन इज मेड कि सारा बिहेवियर इज लर्न। ठीक है, चाहे फिर वो अडेप्टिव हो चाहे माल अडेप्टिव हो। A belief that learning can be effective in changing maladaptive behavior, and there is a focus on setting up well-defined therapy goals with their clients. Okay, then there is the rejection of this idea that human personality is composed of traits, and behaviorists stress the importance of obtaining empirical evidence. Okay, then moving on to the role of the counselor. सो बिहेवियर काउंसलिंग में काउंसलर का रोल एक्टिव होता है, और एज अ रिजल्ट जो क्लाइंट होता है वो लर्न करता है, अनलर्न करता है या रीलर्न करता है बिहेवियर, बहुत से बिहेवियर्स, स्पेसिफिक बिहेवियर्स। इस प्रोसेस में काउंसलर एक कंसल्टेंट, टीचर, एडवाइजर, रीइंफोर्सर और फैसिलिटेटर की तरह वर्क कर सकता है। काउंसलर में इवन इंस्ट्रक्ट और सुपरवाइज पीपल इन क्लाइंट्स environment, गिविंग असिस्टेंस इन द चेंजिंग प्रोसेस। And as effective behavioral counselor operated from a broad perspective and involves the client in every phase of the counseling। ठीक है। तो बेसिकली काउंसलर को क्लाइंट को हर फेज में इंक्लूड करना होता है काउंसलिंग के। सो या दीज आर सम ऑफ द रोल्स ऑफ द काउंसलर। Then, what are the goals? So, first one is behavior therapy can help individuals identify problems, then set goals and develop plans for solving those problems through constructive or goal oriented behavior. Then, second goal is that the focus is on modifying or eliminating maladaptive behavior that the clients display while helping them acquire healthy, constructive ways of acting. Then third one is behavior therapy is often used to reduce the symptoms of psychological disorders like anxiety, depression, phobia, OCD by addressing specific behavior patterns associated with these disorders. It focuses on teaching individuals new skills and coping strategies to manage stress, anxiety, and interpersonal difficulties. And the last goal is clients learn to gain better control over their behaviors by recognizing triggers and using strategies to respond more effectively in various situations। देन व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन बिहेवियरल काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो बिहेवियरल असेसमेंट होता है। तो बेसिकली थेरेपिस्ट एक थरो असेसमेंट कंडक्ट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि टारगेट बिहेवियर क्या है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, मतलब कि व्हाट इज कॉजिंग इट, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लाइक व्हाट फॉलोज इट। एंड दिस असेसमेंट इज यूज टू डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर्स कॉन्टेक्स्ट, कि बिहेवियर किस वजह से हो रहा है, कब इससे स्टार्ट हुआ एंड एवरीथिंग। Then operant conditioning. So this involves modifying behavior either through reinforcement or punishment. Positive reinforcement means reward करना desired behaviors को. Negative reinforcement means remove करना aversive stimuli को जब desired when the desired behavior occurs. Okay. Um, Negative reinforcement means remove कर देना एक स्टिमुलस को एनवायरनमेंट से, जिससे कि जो वो एक्शन है वो इंक्रीज हो, जो वो हैबिट है वो इंक्रीज हो। ओके। रीइंफोर्समेंट इज यूजुअली टू फॉर like rewarding, so that that behavior is appreciated and should be done in the future।
तो इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है. देन पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस टू रिड्यूस अनवांटेड बिहेवियर्स. ये अनवांटेड बिहेवियर रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है पनिशमेंट को. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज यूज ऑफ reinforces. So reinforces are those events that when they follow a behavior, they increase the probability of the behavior repeating. अब reinforcer पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव मीन्स वी आर एडिंग समथिंग, लाइक वी आर गिविंग चॉकलेट जब भी बच्चा खुद से ब्रश कर रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव हो गया कि बच्चे का टीवी टाइम रिड्यूस कर दिया अगर उसके एग्जाम में नंबर कम आए, तो दैट वुड बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ओके. सो सॉरी, बच्चे को दैट वो तो पनिशमेंट हो गया. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वुड बी लाइक एनवायरमेंट से कुछ घटा देना जिससे वो बिहेवियर इंक्रीज हो जाए. Sorry, let me think of an example of negative reinforcement. It's always very confusing. Uh, it always gets confused. I always get confused between these. So, negative reinforcement is like loss of a stimulus that increases a behavior. Okay, so like studying for a test to avoid a failing grade, that would come under negative reinforcement. So, yeah. Then schedules of reinforcement. When a behavior is first being learned, it should be reinforced every time it occurs. Like continuous reinforcement is needed. After a behavior is established, however, it should be reinforced less frequently. In other words, by intermittent reinforcement. ठीक है, तो मतलब पहले like you know uh, you set this goal कि जब भी बच्चा अच्छे नंबर लाएगा, यू विल गिव दिस चॉकलेट टू दैट चाइल्ड. फिर पहले हर टेस्ट के बाद हो रहा था, देन इट वाज लाइक तीन टेस्ट में लगातार अच्छे नंबर आए तब चॉकलेट दी. तो धीरे धीरे वो डिक्रीज करना होता है, और एट द एंड यू हैव टू रिमूव दैट रीइंफोर्समेंट, एंड वो हैबिट बन जाती है, वो बिहेवियर इज लाइक परमानेंट नाउ. जब वो परमानेंट हो जाए खुद से अडेप्टिव बिहेवियर कोई, तो देन we have to stop the reinforcement. So this is about schedules of reinforcement. Moving on, shaping. Behavior learned gradually in steps through successive approximation is known as shaping. When clients are learning new skills, counselors may help break down behavior into manageable units. Like when a child starts walking, तो वो सीधा वॉक करना स्टार्ट नहीं करता, पहले क्रॉल करना, फिर लाइक हाथ पकड़ के चलना, देन खुद से चलना. So like that would come under shaping. Then generalization is like it involves the display of behaviors in environment outside where they were originally learned. For example, at home, school, work, like चलना आपने घर पे सीखा बट बाहर भी यू वॉक ना. जनरलाइजेशन इज लाइक कि बिहेवियर दिखाना environment में outside they were outside of the situation where they were originally learned. So ये indicate करता है कि transference हो रहा है दूसरी setting में. Then extinction is the elimination of a behavior because of a withdrawal of its reinforcement. Okay. Few individuals will continue doing something that is not rewarding. So extinction is like कि suppose पहले बच्चे को लाइक चॉकलेट दे रहे थे जब भी वो खुद से बाथ ले रहा था, फिर वो बंद कर दिया, तो बच्चे ने खुद से लाइक बाथ लेना बंद कर दिया. तो मतलब कि एक बिहेवियर एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसका रीइंफोर्समेंट हटा हटा दिया गया. सो दैट इज एक्सटिंक्शन. मूविंग ऑन टू सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड्स में, यहाँ पे मैं बस ओवरव्यू दे देती हूँ. सो ये यूजुअली फोबिया और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स कि इंडिविजुअल को पहले धीरे धीरे एक्सपोज किया जाए जिस स्टिमुलस से दैट क्लाइंट इज अफ्रेड. एक कंट्रोल्ड और एक रिलैक्स्ड मैनर में ये किया जाए जिससे कि वो टॉलरेंस उनकी हम बिल्ड कर दें उस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके जिससे वो डरते हैं, जिससे एंजाइटी कॉज होती है. देन देयर इज एक्सपोजर थेरेपी.
तो क्लाइंट्स को सिस्टमैटिकली एक्सपोज किया जाता है उनके फियर्स से, जिससे कि उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो, एंड लर्न कि ये जो फियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये नहीं, मतलब जो भी उस स्टिमुलस से एंजाइटी हो रही थी वो नहीं है। Then token economies, so it involves the token या reward use करना as form of positive reinforcement for desired behavior. Like token दे देना कि if you are doing this तो ये token मिलेगा, and ये token you can use for anything. Then moving on, behavior contracts. तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि गोल क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अचीव करने के या ना अचीव करने के, एंड टाइमलाइन क्या है। देन बायो फीडबैक, ये इंडिविजुअल को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में, लाइक हार्ट रेट कैसा है, मसल टेंशन कैसी है, ब्रेन वेव एक्टिविटी कैसी है। और क्लाइंट्स फिर लर्न करते हैं हाउ टू कंट्रोल दीज प्रोसेसेस, जिससे कि स्ट्रेस या एंजाइटी के सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए। देन कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स, सो इसमें इंडिविजुअल अपने थॉट्स और बिलीव्स को रिफ्रेम करता है, जिससे कि उसके बिहेवियर्स अडेप्टिव हो पाए। देन एवर्जन थेरेपी इज लाइक कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस के साथ पेयर कर देना, जिससे कि एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाए और बिहेवियर रिड्यूस हो। देन रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज लाइक इंडिविजुअल को प्रिवेंट करना किसी एक कंपल्सिव बिहेवियर में एंगेज करने से, जिससे कि वो अपनी एंग्जाइटी फेस करे और अल्टीमेटली वो डिक्रीज होती जाएगी, या फिर दे विल लर्न हाउ टू टॉलरेट इट। और टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट एक तरीके की पनिशमेंट होती है जब इंडिविजुअल को उस इन्वायरमेंट से निकाल दिया जाता है, उस सिचुएशन से निकाल दिया जाता है जब भी वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर करते हैं। देन environmental planning, it involves a client setting up part of the environment to promote or limit certain behaviors. Then behavioral rehearsal, it consists of practicing a desired behavior until it is performed the way a client wishes. This strategy gives people an opportunity to practice a challenging task. Rehearsal might involve a role play with the clinician or a practice session with a friend. Then activity scheduling, planning activities that are rewarding and provide a sense of accomplishment can help people in many ways. Having a schedule provides focus and direction, which can counteract inertia, confusion, and problems in decision making. Then there is implosion therapy, which is like an advanced technique which involves desensitizing a client to a situation by having him or her imagine an anxiety provoking situation that may have dire consequences. But the client is not taught to relax first, like in these systematic desensitization. Then flooding is less traumatic because here the imagined anxiety producing scene does not have dire consequences, and in this, patient learns to associate feelings of relaxation with the fear-inducing stimulus. The patient is exposed directly and rather abruptly to the fear-inducing stimuli, while at the same time employing relaxation techniques designed to lower levels of anxiety. And then there is relaxation, which is often combined with other techniques like systematic desensitization, abdominal breathing, hypnosis, visual imagery. Teaching relaxation techniques in a treatment session and encouraging practice between sessions can facilitate people efforts to reduce stress and anxiety and make behavioral change. Then there is assertive training. Assertiveness means standing up for your personal rights, expressing thoughts, feelings, beliefs in direct, honest, and appropriate way. And the client is taught that everyone has the right of self-expression. The client is then made to learn the difference among being aggressive, passive, and assertive actions. Then skill training is there, which is an important component of promoting positive change in teaching people the skills they need to uh, effect that change. Clinicians can teach clients both general skills like decision making, problem solving, and those serving the needs of a particular person. For example, interviewing, anger management, and the last technique we are going to learn in behavior counseling is acting as if. It is used when confronting a challenging situation. People act as if they are someone whom they view
as capable of handling the situation effectively. For example, children undergoing medical treatments have coped more successfully when they pretended to be their favorite superhero. Then what is systematic desensitization? So it is designed to help clients overcome anxiety in particular situations. It is based on the principle of classical conditioning, and it was developed by Joseph Volpe during 1950s. This therapy aims to remove the fear response of a phobia and substitute a relaxation response to the conditional stimulus, gradually using counter conditioning. Okay. So there are three phases to this treatment. First is patient को पहले एक deep मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं. सेकंड पेशेंट को एक हायरार्की क्लियर हायरार्की क्रिएट करने बोला जाता है जिसमें स्टिमुलाई यूज किए जाते हैं लीस्ट एंजाइटी से मोस्ट फियर प्रोवोकिंग इमेजेस तक. लाइक क्लाइंट को पूछा जाता है, बोला जाता है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट कॉजेज एंजाइटी, एंड फिर उन सिचुएशन को रैंक करना कि किससे सबसे कम एंजाइटी होती है, किससे सबसे ज्यादा, 0 से लेके 100 तक, यू नो, टू रेट दोज. And to help that client avoid anxiety and face the situation, the counselor teaches him or her to relax physically or mentally. ये हायरार्की फिर रिव्यू की जाती है और लाइक जब एंजाइटी जब क्लाइंट की एंजाइटी बढ़ने लगती है, द क्लाइंट इज हेल्प टू रिलैक्स अगेन. ठीक है. मतलब बेसिकली उनकी हाइरार्की जो डी थी वही उसी से उसको एक्सपोज किया जाता है. एंड देन जब उनकी एंजाइटी बढ़ने लगती है तो उनको रिलैक्स करने बोला जाता है वही टेक्निक यूज करके जो कि फर्स्ट स्टेप में सिखाई थी. एंड द प्रोसीजर्स देन स्टार्ट anew until the client is able to be calm even when thinking about or imagining the event that used to create the most anxiety. तो अभी बस ये इमेजिन कर रहे हैं. ओके, अभी रियलिटी में नहीं वे फेस दो सिचुएशंस. ठीक है. देन थर्ड क्या है, पेशेंट वर्क्स देयर वे अप द फियर हायरार्की स्टार्टिंग एट द लीस्ट अनप्लीजेंट स्टिमुलाई एंड प्रैक्टिसिंग देयर रिलैक्सेशन टेक्निक एज दे गो. व्हेन दे फील कंफर्टेबल विद दिस, they move on to the next stage in the hierarchy. If the client becomes upset, they can return to an earlier stage and regain their relaxed state. The client repeatedly imagines this situation until it fails to evoke any anxiety at all, indicating that the therapy has been successful. This process is repeated while working through all of the situations in the anxiety hierarchy until the most anxiety provoking. For example, a spider phobic might regard one small stationary spider 5 meters away as only modestly threatening, but a large, rapidly moving spider 1 meter away as highly threatening. The client reaches a state of deep relaxation and is then asked to imagine the least threatening situation in the anxiety hierarchy. Okay. पहले उनको सिखाया गया डीप रिलैक्सेशन एंड देन उनसे पूछा गया कि सबसे लीस्ट थ्रेटनिंग सिचुएशन इमेजिन करो. फिर धीरे धीरे उस क्लाइंट को बोला गया कि ठीक है अब जो मॉडरेटली एंशियस करती है वो सिचुएशन इमेजिन करो. देन जो सबसे ज्यादा करती है वो करो. तो धीरे धीरे उनको बेसिकली टॉलरेट करना सिखाया गया. Then behavior modification. It was developed from the work of B.F. Skinner's theory of operant conditioning. Behavior modification seeks to change or shape behavior through a set of stimuli and response actions. Skinner believed that there were three types of responses: neutral, reinforcing, and punishing. Neutral responses, of course, were not positive or negative. Reinforcing responses, on the other hand, were considered to be positive, while punishing responses were thought to be negative. And the general theory of behavior modification was also shaped by the work of Edward Thorndike. His law of effect posits that certain actions in a situation are made as a result of the available consequences. For example, the probability of you touching a hot burner voluntarily is going to decrease based on the consequence that the burner is hot and you would scorch your hand. Then behaviorists develop different approaches and schedules for shaping behavior. First one is modeling, which involves demonstrating desired behaviors for the client who then imitates those behaviors. This is particularly effective for teaching new skills or social behaviors. जैसे ऑफिस में सीनियर को बोला जाता है कि आप इंटर्न्स को गाइड करो, सिखाओ कैसे ये काम करना है. दैट वुड come under modeling.
Then cueing, it is like reminding a person to perform a certain action at a given time. ठीक है कि डेली बोलना अपने बच्चे को कि रात को 10 बजे सोने से पहले ब्रश करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, इट टीचेस अ पर्सन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ stimuli but not for another. The reward or reinforcement occurs only after the appropriate response has been given. Then substitution, when a current reinforcer no longer prompts the desired behavior. A substitution may occur in which a new reinforcer is presented, ठीक है। पहले लाइक यू यूज टू गिव चॉकलेट जब भी बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, बट देन यू रियलाइज कि उससे कैविटी हो रही है टीथ में, तो वो वाला सब्स्टिट्यूट करके, चॉकलेट को सब्स्टिट्यूट करके यू इंट्रोड्यूस योगा बार और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बेसिकली। जब भी बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा तो नाउ यू आर गिविंग हिम और हर होममेड कुकीज और एनीथिंग which is healthier than chocolate. Then satiation, it means letting a person get tired of performing an undesired behavior. Sometimes we say ना कि करने दो, अगर मैं रिएक्शन नहीं दूंगी तो वो खुद ही बंद हो जाएगा। It's like that. Then avoidance means teaching a person to avoid an unpleasant situation. So these were some behaviors, like basically these are some approaches which are used under behavioral modification. Then what are the strengths of behavioral counseling? First of all, it has a strong evidence base for treating various psychological disorders like depression, phobia, OCD, etc. Then behavior therapy concentrates on observable and measurable behaviors, which makes it clear and specific. Then it involves setting clear measurable goals and implementing specific strategies to achieve them. Then clients are taught practical skills to manage their symptoms and behavior, which include relaxation training, exposure therapy, social skills training. Then it is effective for behavioral problems like addiction, phobias, compulsions, etc. Then it is applicable to different populations, like it can be applied for children, then adults, then older people. In many cases, behavioral therapy is relatively short term. Then what are the limitations? So it has a limited focus, uh, because it focuses on the present. It doesn't really focus on the unconscious part of mind. Then it is ineffective for complex psychological issues like personality disorders. Then it doesn't really consider past, so it kind of reject past traumas. Then it may not address root causes, because root causes are usually like related to childhood trauma, and हम past में यहाँ पे जा ही नहीं रहे। Then it has lack of emphasis on the therapeutic relationship. तो इसमें client therapist relationship को उतना ज्यादा emphasize नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है कि कैसी relationship होनी चाहिए। Then it is very much dependent on homework and self monitoring. तो अगर client equally involved नहीं है तो ये उतना work नहीं करेगी। Then इसमें बहुत chances होते हैं relapse होने के, एक बार therapy बंद हुई तो the person might relapse. Then not suitable for all conditions, like हर psychological disease के लिए, disorder के लिए this is not useful. And then there is some stigmatization also, which is again a limitation. Stigmatization about certain behavioral therapy, not therapy, but behavioral techniques. So it, that stigma is also there. So these are few of the limitations. So that was it for today's video. That was it about behavioral counseling. So if you have any doubt related to behavioral counseling, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching the video. Please do give the video a thumbs up and please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video once again.